Hello, good morning, everyone. Good morning. Vijay, Om Prakash, Jyotsna. ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛ ମତେ? Am I audible to everyone? Clearly? Okay, fine. So without any further delay, we'll start the class. Okay? Whenever you need to ask any question, just unmute and raise your hand, or you can ask directly with your mic. Okay? So today our topic is your Indian economy. All of you are aware of it, right? समझ जानिଛ aware ଅଛ ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ओके सो इकोनॉमिक्स ର बेसिक फंडामेंटल्स कौन पे इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मनी यस और नो इकोनॉमिक्स ର बेसिक जिंस होला जे आमे हमर पैसा को केमती मैनेज करछो से पैसा तमरो निजर हे पारे से पैसा तमरो घर पे हे पारे से पैसा तमरो राज्य पे हे पारे देश पे हे पारे वर्ल्ड राइट सो इकोनॉमिक्स is basically handling the resources what you have, what is available to you, right? How you manage your resources effectively and efficiently. Resources always limited, right? am pakhre paisa sabule limited honge nahi income limited, resources limited, but how you spend your money, that is all up to you, right? So there you fix your budget, there you fix your future planning and strategies. Yes or no? बस याकू नहीं कि पूरा पूरी गोटे पाठ तैयारी हिची सेटा होची इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज ए सोशल साइंस व्हाट इट इज दिस इज नथिंग बट ए social science, right? As we live in a society and we deal the elements of the society, right? So social and some evidence is there, some planning and strategies required to manage those resources which is available in your society. That is why it is known as your social science. This is the art of handling your resources that is available in your society. So this is social science basically of what? Social science of what? The goods and services you produce, right? And distribute and produce कले distribute कले कहा भीतर distribute हला कौन पे हमें produce करथिले किए जने end customer थिबो ताकु से कौन करिवो यूज करिवो राइट फाइनल इंटेंशन कौन से गुड्स को यूज करिवा सिंपल गोटे पेन राइट प्रोड्यूस हला जति टंका लागुची लागु ताकु पुणी पहुंचे पड़ियो का पाखरे जी की यूज करिया पे चाहूची लेखिया पे चाहूची तो ताकु डिस्ट्रीब्यूट करा हबो होलसेलर डीलर शॉपकीपर से डिस्ट्रीब्यूट हे सारला एंड कस्टमर पाखरे पहुंचला वर्तमान सेटा को किए किनिबो जाको दरकार अछि जी यूज करिवो सो व्हाट ही विल बी told as or what he will be called as your end customer or consumer. So production, produce, distribute and consume, right? तो आमे जदि किछि जिंस खाउचे फूड जदि आम थाली रे खाइबा जदि आम थाली रे अछि से थाली रे खाइबाटा केमिति आछि कोठी ना कोठी सेठी कोठी ना कोठी ये कोन होछि प्रोड्यूस होछि से प्रोड्यूस होला पर से प्रोसेस होउची प्रोसेस है कि
आम पाखकू मार्केट रे अवेलेबल होची माने डिस्ट्रीब्यूट होची राइट डिस्ट्रीब्यूट हला पर आमे मार्केट में जाके किनी के आनुचे परिबा कि जहां भी रॉ मटेरियल्स आउ आमे प्रिपेयर करचे फूड तो एंड प्रोडक्ट कौन फूड इन आवर प्लेट एंड वी आर द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम तो आमर इंटेंशन वाला खाइबा राइट कौन खाइबा केमिति खाइबा जहां भी खाइबा मार्केट रू किनिबा किंतु मार्केट रू जिंस आसु कोटे प्रोड्यूस होची सो इट इज योर फॉरवर्ड फ्लो और बैकवर्ड फ्लो ए तीनटा बाहर आउ किछि नहीं any kind of goods and services you produce the end result is to consume right तो ये जो तीनटा प्रोसेस रहिला प्रोड्यूस करिवा ठू कंजम्पशन जाए आको केमिति हमें हैंडल करिवा प्रोसेस करिवा सो दैट with the availability of minimum resources right आमे maximum output को पाई परिवा that will show your efficiency हैला जेते की टंका अछि हम पाखरे सेते की टंका को हमें यूटिलाइज करिकि हमें मैक्सिमम आउटपुट केमती पाइबा सब बेले हमर सब बेले ए गुटी चेष्टा थाए हां कि नै ठीक से भलिया पूरा देशर इकोनॉमी मध्ये सेमती फंक्शन करे राइट जेते बेले आमे आम लेवल रे इकोनॉमी कथा चिंता करू बहुत छोट स्तर रे दैट इज नोन एज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स it involves the individual consumers farms and the prices right गोटे जनकर एक्सपेंडिचर हला इनकम हला रिसोर्स अवेलेबिलिटी हला मो पाखरे मोर केते की फिक्स्ड इनकम अछि ताकू धरि मु केमिति मास जाकर खर्च करबी बजेट तैयारी करबी ए सब कहा पई हला जनक पई हला गोटे हाउस होल्ड पई हला गोटे बहुत छोट स्तर रे हला सेत एटा कोन हला माइक्रो इकोनॉमिक्स सो मेनी थिंग दैट रिसोर्सेस at a micro level is known as your microeconomics right किंतु जते बेले गोटे स्टेट को रन करिवार अछि जते बेले गोटे देश को रन करिवार अछि जते बेले गोटे वर्ल्ड को हमें ए रिसोर्सेस को नै कि तार इफेक्टिवली यूज करिवा पई चिंता करूचे दैट इज नोन एज योर मैक्रो लेवल और इट इज नोन एज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स सो मैक्रो मींस लार्ज micro means small right so national income inflation unemployment growth poverty right ये सब जिंस कौन नेशन कथा आसला माने ये गोटे बहुत बड़ लेवल रे इन्फ्लेशन कथा आसला माने बहुत बड़ लेवल रे एम्प्लॉयमेंट ये सब जिंस कौन गोटे लार्ज स्केल होची मैक्रो इकोनॉमिक्स हला तो इकोनॉमिक्स को हमें तीनटा भाग रे डिवाइड करछे कौन गोटे हला माइक्रो आउटा मैक्रो सो बेसिकली तम सिलेबस रे जहा अछि आमे जाकू हमें आगु डील करे पे जाउचे सेटा मैक्रो लेवल रे करे पे जाउचे सो मैक्रो इकोनॉमिक्स सो व्हाट आर द फीचर्स एंड पोस्टुलेट्स जहा भी हमर साइलेंटली मेंशन हिची सिलेबस रे से सब को हमें केमते डील करबा मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्रू रे डील करबा राइट आगु जहा भी तमरो सिलेबस कवर हबो सेटा कोथरे जिवो मैक्रो इकोनॉमिक्स रे ठीक अछि आज हमर इंट्रोडक्शन सेथि हमें किछटा बेसिक टर्मिनोलॉजी जानिबा इंडियन इकोनॉमी कहा ऊपर पर्यवेसित और इंडियन इकोनॉमी रो फीचर्स साइलेंट फीचर्स कोन कोन ताको हमें देखियो हला जेतेबे मो इंडियन इकोनॉमी कथा कहूची ता अर्थ तुमको बुझियक पड़ियो जे इंडिया रो इकोनॉमी ता अर्थ मैक्रो इकोनॉमी दैट्स इट बुझियला से कथा इठे लिखा है पहले स्लाइड रे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस राइट so this is nothing but the practical examples what is written here gst calculation consumers and government revenue fiscal deficit ये सब टर्म्स तुम सुनुथबो ना बजेट रो फिस्कल डेफिसिट हमरो इंडिया रो फिस्कल डेफिसिट केते केते रेवेन्यू डेफिसिट अछि ये सब जो गोटे बड़ बड़ टर्म अच्छी आम आगू आगू जो पढ़ी पढ़ी क्लास आगू बढ़िया ये सब विषय सब क्लियर हम किसी व्यस्त हो किंतु एबे जानो जे जहा जहा ए सब टर्मिनोलॉजीज आम यूज करूचे ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज बिलोंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट क्लियर ओके सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी
ये सब ना तुम शुणी थी है कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी ओके अच्छा सिंपल कथा जिते इकोनॉमी कथा आसीबो गोटे कथा मन रखिबो जे बिजनेस हला आमे जेते प्रकार बाहर सब टंकार कारबार देखुचे कि सबुडा किछि ना किछि गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा गोटे संस्था द्वारा ही होउची हो कि नहीं तो से सब संस्था कहा द्वारा परिचालित whether it is private owned entity or your government owned entity right education institutions are there so some institutions are public owned or the government owned right and some institutions are privately owned entities right तो प्राइवेट स्कूल भी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छी हाँ कि नहीं सर्विसेज रे बैंकिंग सेक्टर सपोज प्राइवेट बैंक्स अच्छी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छी राइट अच्छा प्राइवेट आउ पब्लिक भीतर डिफरेंस केवल एतिकी आमे समस्त जानिचे जे प्राइवेट इज समथिंग इट इज wholly owned by a specific person or group of persons right whereas your public is regulated by the government बुझियला तो एबे ताकू नै कि दीटा ना बाहरची तार अन्य ना हला प्राइवेटली ओन्ड एंटिटीज व्हिच relate to your capitalist economy whereas your government owned entities involved in your economy that economy is known as a socialist economy okay but where both the private and the public both the private and the government entities involved in an economy that is known as your mixed economy so mixed economy माने कौन बोले दीट जगह capitalist plus socialist मु तमरा जानिया पे केवल कहूची कैपिटलिस्ट माने हला कोन प्राइवेट सोशलिस्ट माने कोन गवर्नमेंट और पब्लिक अच्छा गवर्नमेंट माने कोन पिले गवर्नमेंट माने आउ केही नुहो पब्लिक आम द्वारा निर्वाचित होइथिबा गोटे ग्रुप ऑफ पीपल को ने के गोटे गवर्नमेंट के रहिछि ता माने कोन आमे ही निर्वाचित करकी गोटे गोटे लोकन को बसैचे जे कि आमको रूल करचंती विथ सर्टेन क्राइटेरिया राइट सी होची कॉन्स्टिट्यूशन सी हला पार्लियामेंट आम पई ही आमे निजे लॉ बनौचे जेहेतु इंडिविजुअली करबा एते संभव न कोटी कोटी लोकन को कथा सेते कि आमे हमर रिप्रेजेंटेटिव पठैचे गोटी जगह को they are the lawmakers of the nation they only execute so executive body is also different and another party is also there who will monitor how they made the law and how this is being executed that is a part of your polity three organs of the government one is your lawmakers then your executives who will execute the law then is your judiciary who will monitor the functionalities of both the lawmakers and executive right so legislative executive and judiciary right ठीक ये बढ़िया फंक्शन करे ना ठीक से ही बढ़िया गवर्नमेंट माने होची तमरो सेही लोक माने जहा को नेके हमें बसेछ सो दैट इज अदरवाइज नोन एज योर पब्लिक एंटिटी राइट सो दिस इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी आम इंडिया रे इंडियन इकोनॉमी को जदि हमें देखिबा प्राइवेट भी अछि गवर्नमेंट भी अछि हां कि नहीं सबुथिरे मु तुमको एग्जांपल भी दे सारी तमे जे कोन जगह को जाउछ देखुछ देखो गवर्नमेंट भी अछि प्राइवेट भी अछि जोडा को बहुत एसेंशियल जो सर्विसेज अछि सपोज हॉस्पिटल राइट मु एजुकेशन कोटा कथा कहली एबे के जिबा में हेल्थ सेक्टर हॉस्पिटल्स राइट सो इन हॉस्पिटल्स व्हाट यू विल फाइंड both the government owned hospitals or the public hospitals are also there and you will find the private hospitals as well right जदि तुम पाखे पैसा अच्छी तुम आउ टिके अधिका सुविधा सुजोग पाया पई चाहछो definitely you can go for the private hospitals but if you are poor right you are in the below poverty line right so you must get that health facility as a citizen of your India this is your basic fundamental right so that will be ensured by the government through government hospitals
So both the facilities are also available, right? So private and government. तो जोड़े दीट देखो कथा आसुची आमे देखिबा सेटा कोन mixed economy बुझियला but whereas few countries you will find their सेमानक भितरे सब बेले कोन ना अधिका प्राइवेट ओन्ड कथा थिबो जेमति यूएसए रशिया कथा तुम देखियो गोटे बेस्ट एग्जांपल फॉर योर सोशलिस्ट चाइना ठीक अछि तो बेसिकली आमे ए दिनटा भितरु काहे कि आमे गोटी को चूज करबा कि आउट को चूज करबा कि दिल जाको मिसे कि देबा कारण कोन काहे ना एमान के भितरे किछि किछिटा डिफरेंस अछि ऑब्वियसली तमे ही कहबो एबे जो प्राइवेट बैंक्स अछन कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अछन तमे जानि छ प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो दे आर providing the health services best to best health services in the society as well as the government hospitals are also providing the health services in the country, right? But the private entities are profit oriented. Okay, they are profit oriented. They are not people oriented. They are not welfare oriented. तमरो भल पाई बोली कि से माने काम करबेठु अधिकार चिंता करिवे जे they are corporates, how they earn money, how they grow economically, right? Financially. So that is their motive. But the public owned, government owned, जेहेतु आमे आम पाई बोली कि सरकार बने कि आम पाई बोली कि रास्ता घाट तैयारी करछे कि स्कूल तैयारी करछे कि हॉस्पिटल तैयारी करछे these are all public goods, right? तो तार उद्देश्य कोन they are not profit oriented, they are people oriented, welfare oriented, right? So this is a basic difference between your public and private. Hello. So next we'll move towards your features, your capitalist economy जोड़ा मु तुमको कहूथिली private ownership, right? Ownership is what kind of ownership? Owner जने किए थिबो जने private entity थिबो बा group of people मिसी कि ताकू बनेई ठीक अछि profit motive जोड़ा मु तुमको कहूथिली profit motive drives production तो कैपिटलिस्ट रे मुख्य उद्देश्य होला कोन मु केमती अधिक लाभ पाई मो लोकन को सेवा देबी सत कथा किंतु प्रथम उद्देश्य कोन सेवा देवा भितरे मते केते लाभ अधिक हैला मार्केट फोर्सेस डिटरमिन्स द प्राइसेस जेते डिमांड बढ़िबो सेते प्राइस बढ़िबो तमे जाउछो कि नै बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन को स्कूल रे मिलुची प्राइवेट स्कूल मु सेठी कि बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल कोडा अछि मु सेठी कि भलो डाक्टर सोसाइटी रे की अछि तार को क्लिनिक अछि मु सेठी कि राइट ए सब रो उद्देश्य कोन जीए जेति की डिमांड को निजरा बढ़ाई पारिला थ्रू देयर product and their quality of the product the demand will get increased and you will follow that trend or you want to avail that product or services आ जोड़े डिमांड बढ़िला पिले सेट तो प्राइस बढ़िबो ही बढ़िबो हां कि नहीं अल्फोंसो आंबो अछि कि नहीं सब तो मैंगोस मार्केट रे अछि डिफरेंट वेराइटी मार्केट रे अछि किंतु जार डिमांड अधिक रहउची ता प्राइस अधिक रहउची ऑब्वियसली राइट ठीक से भलिया तमरो जो ऑर्गेनाइजेशन बा जो ओनरशिप रो डिमांड बढ़िला तार ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़िबो राइट सो द मार्केट फोर्सेस determines the prices right this is not decided by the government the market forces market माने किए आमे ही बढ़ौचे राइट मार्केट रे एई प्रोडक्ट रो दाम सबटु भलो अछि एई प्रोडक्ट रो डिमांड भलो अछि फीचर्स भलो अछि एई लैपटॉप रो सिस्टम सबटु भलो अछि ता अर्थ कोन ता डिमांड अधिक हो डिमांड अधिक प्राइस बढ़ी सिंपल कथा राइट एग्जांपल यूएसए largely market oriented Singapore these are the best examples of your capitalist economy right अच्छा यार एडवांटेज भी अछि बिले कोन efficiency and innovation तमे देखिथिबो जति कि हमरो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अछि आ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अछि ता भीतर तमे सर्विसेज को जति कंपेयर करिवो यू विल फाइंड मच मोर better services in your private sector banks yes or no काहे कि ना से माने compete करंती परस्पर right compete करले हबो कोन in competition you will find the best product in the market you will try to make yourself better day by day right how you will
try to do better, how you will try to make efficient products. Why you will try? Because you want the profit. और जे प्रॉफिट चाहिबो सी कोन करिवो ताकू अन्यठू मार्केट रे अन्य जो प्लेयर्स अछन ताकू निजठू अधिका जदी परिवार अछि ताकू जदी भलो सर्विस देबार अछि ताहाले निजको बेटर बनेक पड़ी नो डाउट राइट तो सी कोन करिवो इनोवेट करिवो सो इनोवेशन इज ए बेसिक एसेंशियलिटी और बेसिक फीचर्स ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी राइट तो सब बेले नुआ नुआ फीचर्स आसुथो मोबाइल हला कि लैपटॉप हला कि schools हला कि colleges education sector health sector any goods and services you'll find different way innovative ways how they will compete to each other तो जे मार्केट रे सबुटु अधिका डिमांड को आनी पारला तार डिमांड बढ़िला तार प्राइस बढ़िला और ताकू लोक पसंद करिवे पैसा से अधिका ना पैसा अधिका मतलब प्रॉफिट अधिका हो तो इनोवेशन सब बेले इनोवेशन तुम देखियो सब बेले प्राइवेट एंटिटी मानकर नुआ नुआ फीचर्स सब आसीबो तापर गवर्नमेंट वाला ताको अडॉप्ट करिवे काहे कि ना गवर्नमेंट रे तुमको से भय न थाए जे मु ऑब्सोलीट हे जी राइट वेरेज प्राइवेट रे तुमको प्रॉफिट अधिक करिवा पय था राइट आर डिमेरिट भी अछि खाली एडा माने सब निछ मेरिट नो डिमेरिट भी किछ अछि राइट व्हाट आर द डिमेरिट्स लिमिटेशंस इनकम इनइक्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल अपोलो राइट कि तमे जे कोनोसी गोटे भलो प्राइवेट हॉस्पिटल रो कथा को जो माने कि कॉर्पोरेट ढांचा रे चलांती बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ सर्विसेज दे प्रोवाइड इन द सोसाइटी बट केते जण सेमती अछंती आम सोसाइटी रे से क्रीमी लेयर भितरे जो माने कि जाय के से हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करि परिबे वेरी लिमिटेड राइट वेरी फ्यू पीपल यस और नो तो इठी हला कोन पिले जहार इनकम अधिका से माने ही से सर्विसेज को अवेल कर परिबे राइट so what happens here when you have the income inequality right you cannot avail that services or जे सेई भलिया ढांचा रे पडिला बा सेई कंपनी ग्रो करला डिमांड को आनी परला से माने ग्रो अधिका रो अधिका करि करि जिवे आउ जो कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड न है कि जदी टिके सर्विस ओरिएंटेड हला कि लोकन को पाई बोली कि वेलफेयर ओरिएंटेड हला सी कोन करबो तार मार्केट को डिमांड रेज करि परिबोनी आ सी सब बेले कम प्रॉफिट रे ही रहे को पड़िबो तो एटे कोन हला भलो कंपनी ग्रो करि गला आ मीडियोकर कंपनी तळगु आसी राइट स्कूटी व्हीकल इंडस्ट्री को तमर मोटर व्हीकल इंडस्ट्री को राइट कि तमर आईटी इंडस्ट्री को जो कंपनी गोटे ग्रो करछि आमे से 4-5 ना कहि जाउछे से मानी ग्रो करि जाउछ ता माने कोन होछि थिबा लोकर पैसा बड़ी जाउछि आ जार नाही से कमी जाउछि ता अर्थ कोन हला एठी इक्वालिटी मेंटेन ही परला नाही इकोनॉमी स्टेटस समस्त का समान रहिला नाही सो व्हाट हैपेंस हियर इकोनॉमी रे कोन हला गोटे इनइक्वालिटी स्टेटस आसला कोन दैट इज इनकम इनइक्वालिटी राइट एठे इक्वल स्टेटस मिलला नाही तुम जानि थो जो माने आईटी सेक्टर रे काम करछन कि कॉर्पोरेट सेक्टर रे काम करछन दे change their jobs they switch their jobs to get a better income whereas in government sector where the persons who are working or the employees who are working they are people oriented or the welfare oriented but से मानक पाखरे से सुविधा नाही जे से माने सब बेले एमती कंपनी चेंज करके निज प्राइस को बढ़ाई पारे ता माने कोन बेसिकली व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच द कंपनी यू डू what you do you try to make yourself better day by day or you try to innovate yourself you try to compete with others in the market right so you want to sell yourself in the market तमे तम निज को बिक्री करो जे हां मु अन्यठू केति कॉम्पिटिटिव मु शो करूची राइट तो ठीक से भलिया तमे अधिक रो अधिक ग्रो करछो प्राइवेट रे जेतेबे तमरो डिमांड बढ़ुची whereas in your government sector that you won't see right so that is the limitation you will see in the socialist economy. See, state ownership, that means what? Government ownership, simple, right? Central planning of production and distribution. State ownership माने कौन पिले? Government ownership, right? तो एटा government ही decide करिवो जो तीनटा हमर पिलर थिला इकोनॉमी रे कौन कौन थिला? Production, distribution and consumption. तो केमिति प्रोड्यूस हबो, केमिति डिस्ट्रीब्यूट हबो, आउ केमिति
कंजम्पशन हम आ प्राइस लेवल कौन रहिबो सेटा की डिसाइड करछि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट केबे भी चाहिबनी जे एमिति गोटे एते हाई रेंज रे हम गोटे प्रोडक्ट को बाहर करबा जोथरे की गोटे साधारण गरीब लोकटे बा साधारण लोकटे इंडियन सिटीजन जे की किन ही पारिबनी ताको कंज्यूम ही करि परिबनी तो सबले से देखिबो कोन प्रॉफिट हमर लेस हो चलिबो किंतु सब लोक हमर सुविधा पा हला गवर्नमेंट स्कूल नो डाउट प्राइवेट स्कूल तुलना रे सेति की तुमको सुविधा सुजोग मिली परिबो नाही पीपल टू टीचर रेशियो it may not be maintained तुमको से हाई क्लास क्लासरूम रो फैसिलिटी न मिली पारे एलईडी बोर्ड रे स्मार्ट बोर्ड रे तुमको टीचिंग फैसिलिटी न मिली पारे एसी क्लासरूम न ही पारे बट द बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी you will get that will be ensured by the government right so basically what you do गवर्नमेंट रे कोन होची ना लोक समस्त पढ़ी परिबे आ समस्त आगु को बढ़िबे मागणा हो किंतु समस्त बढ़िबे किंतु प्राइवेट रे कोन होची बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी देबी ताको बढ़िया एनवायरनमेंट देबी आउ जे से एनवायरनमेंट पाया पई चाहूची मत अधिक अधिक पैसा दो मु भी अधिक इनोवेट करबी भलो टीचर आनिबी भलो एनवायरनमेंट जोगेबी आउ बस से माने खुश मु भी खुश बट व्हाट हैपेंस हियर जो माने साधारण वर्गर लोक जी की पाठ पढ़िया पे गोटे गोटे बहुत साधारण बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ सेटा को से अवेल करि पारु नाही काई करि पारुनी काहे कि ना से इनकम इनइक्वालिटी रा शिकार हिच से इनकम सेते के करि पाउनी जेति की ताकू गोटे प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल रे पढ़िया पे बोली की दरकार बुझियला तो सोशलिस्ट रे कोन समस्तक पई एठी देखा जाय एटी समस्त देखा जाए सेंट्रल प्लानिंग माने गवर्नमेंट रो प्लानिंग इटे इन्वॉल्व रहइबो फोकस ऑन सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी बट इट ठीक ऑपोजिट रही चले राइट सेटा कोन थला प्राइवेट ओनरशिप एटे कोन हला स्टेट ओनरशिप इनइक्वालिटी इक्वालिटी बुझियो जी एग्जांपल्स किछटार मॉडल रो ना दिछि क्यूबा यूएसएसआर माने तुमको जोड़ा रशिया कथा कहउतली बिफोर इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इट वाज यूएसएसआर आफ्टर इंटीग्रेशन इन 1991 it became Russia so what is the limitation less market flexibility काहे कि ये मार्केट द्वारा ड्रिवन नुहो मार्केट रे डिमांड रही जई गले गवर्नमेंट स्कूल रो प्राइस बढ़ी जिवो नाही से प्राइस के डिसाइड करूची गवर्नमेंट और द स्टेट because it believes in welfare of the people लोक माने जोड़ा अफोर्ड करि परिबे जो पैसा निज पिला को पढेबा पई से माने से पैसा ही दे परिबे आ से पैसा ही फिक्स हबा क्षति हो किछ कथा नहीं गवर्नमेंट रो प्लान नुह जे मु प्रॉफिट पनेबी गवर्नमेंट रो प्लान जे समस्त पढिबे राइट सो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इट इज नॉट मार्केट ओन्ड अच्छा जदि मार्केट ओन्ड नहीं मु आउट कथा ऐड करि परिबे you will find less innovation कोडी थिला जोटे कंपटीशन थिला कोडे privately owned entities or the capitalist economy here you will find innovation compromised innovation तो पाइबो नाही competition less सेति हम कंपेयर करछ ना टीचर माने आछोंदी ताकर पढ़ार शैली से ही पुराना कालिया शैली रे चले इनोवेशन एबे बे किछि किछि हेलानी कि तो आगुर सेमती जेमती थिला सेमती थिला यू कैन कंपेयर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स यस ठीक से भलिया तो ये हला सोशलिस्ट इकोनॉमी रो स्टेटस राइट देन कम्स टू योर मिक्स्ड इकोनॉमी राइट जो कि तीन जक रहइबो पब्लिक एंड प्राइवेट हला तो जेते बेले इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस राइट जेते बेले आमे इंडिपेंडेंट हेलु वी इन 1947 तो सेठी कोन थिला पहिले सेठी हमरो टाटा भलिया कंपनी भी एक्जिस्ट करूथिला राइट जोडे की बड़ बड़ इकोनॉमिस्ट माने थिले इंडस्ट्रियलिस्ट थिले राइट ता सहित एमिति भी बहुत पिछला वर्गर लोक थिले जो मानको पाखरे खाइबा पई भी मुठे दाना नथिला राइट तो आमे आम इकोनॉमी को सेठी बूस्ट अप करिया पई चाहू ना कि इंडस्ट्री बने कि आमे किछि लोकन को ही सेठी आमे कैटर करिया पई चाहू तो से केस रे हला कोन आमे हमर इनोवेशन को भी रखिबु आमे ता सहित लोकन को वेलफेयर को मध्ये ध्यान दे
right? So both socialist and capitalist economy, we we adopted the model from USA, that is your capitalist economy, and USSR, that is your socialist economy. Dita super power thile pile se samare, independence samare or 1950s samare, gote la USA, out la USSR. These are separate economic model. One is your capitalist and another is your socialist. But we adopted the both. ठीक है, based on our socio-economic conditions. Is that clear? So that is our mixed economy, government regulated markets while allowing the private entities, but with some kind of regulations, and that regulation will be imposed by the government, right? Example India. ठीक है, so mixed economy concept हमारा इंडिया रे अडॉप्ट करा है. ठीक है, next features of Indian economy. तमाने features of mixed economy. सिंपल कथा किंतु बेसिकली इंडियन इकोनॉमी रे हमर कोन कोन जिंस एंती अछि जोटा को कि हमें एठी हाइलाइट करि परिबा. ऑब्वियसली यस, मिक्स्ड इकोनॉमी, लार्ज पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स. ए सबु क्राइटेरिया को दृष्टि रे रखि कि ही हमर इकोनॉमी के हम मिक्स्ड बनै छै पिले मदर रख हला. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को हमें ध्यान रे रखि कि हमें हमर इकोनॉमिक मॉडल को मिक्स्ड बनै छै, माने उभय रहि परिबा. जेहेतु एते बड़ पॉपुलेशन अछि, यूएसए पॉपुलेशन केते, हम पॉपुलेशन केते, अराउंड 5 to 6 टाइम्स. तो एते बड़ पॉपुलेशन को हमको जदि कैटर करिवार अछि ताहले हमको केवल प्राइवेट रे तिष्ठि परिबा नै, नहले अधे लोक बोकरे मरि जिवे, से माने ग्रो ही कर परिबे. तो हमर बेसिक उद्देश्य कोन, व्हाट इज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वी आर ए वेलफेयर नेशन, राइट? वेलफेयर नेशन रो अर्थ कोन? आमे समस्त को नै कि चली, राइट? आ सेटा केमति पॉसिबल होबो जेते बेले 80-90% of the population are living in the below poverty line at that point of time, when they don't have the access to the basic necessities of life, right? How we can think of the private ownership, how we can think of the corporates? Not possible, right? तो आमे कोन कलु से ठीक कॉर्पोरेट्स भी चलंतु, कॉर्पोरेट मानकर पैसा भी आसु, तांकर टैक्स नै कि से टैक्स मनी को आमे यूटिलाइज करनु, से जो मैक्सिमम पॉपुलेशन अछंती, लार्जर पॉपुलेशन अछंती, से मानको आमे easily accessible करेलु जो basic necessities of the goods and services, so that they can also grow together. हला आमे समस्त को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़िया पे चेष्टा करूछु, राइट? हमें फ्री गुड्स दोछु, राइट? राशंस दिया होची, फ्री राशन दिया होची, फ्री हेल्थ सर्विसेज दिया होची, राइट? समस्त पे इनकम टैक्स लागू करा हबो नाही, काहे कि ना समस्त को पे एटा पॉसिबल ही नो, राइट? तो समस्त को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमको जदी बढ़ेबार अछि ताहले हमको गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस इज वेरी मच नेसेसरी, राइट? Agriculture is still important and services contribute the largest share to GDP. Do you know our economy model होची agriculture based? काहे जानि छ? काहे केला तबे जोठी के भी जीव अच्छा 70% of the population living in the village, yes or no? And village denotes what? Village denotes the agriculture. Basic living fine, आमे जब देखिवा 70% of the people are engaged in the agriculture activity or the primary sector, right? But से माने सोहुचन सबटु करिवो. जदि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमर इनफॉर्मल इकोनॉमी रे बचुची आ एग्रीकल्चर रे बचुची, किंतु से माने होचन सबटु अधिका करिवो, ताले हमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोठो ऊपर कोठियो पॉसिबल ही नहीं, राइट? तो हमको सेही लोक मानक विषय रे भाबिबार अछि जो माने मैक्सिमम लोको जो सेक्टर को बिलोंग करूछंती, हमको तांकू ऊपर को उठेबार अछि, राइट? देखो ये होची एग्रीकल्चर, एटा टोटल इकोनॉमी. हम जब देखिबा दिस इज योर टोटल इकोनॉमी, right? This is your total economy or the total GDP, right? Whereas you'll find this is your agri, right? And this is your services, this is your manufacturing, right?
आउ ए एग्रीकल्चर आसुची सबुटू मिनिमम अमाउंट ऑफ जीडीपी बहुत लोग एंगेज अच्छा एग्रीकल्चर किंतु सबुटू कम पैसा जदि आदाय होची सेटा होची एग्रीकल्चर तो सेथि पई बोली कि चासी मानको आत्महत्या द डिस्ट्रेस ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडियन फार्मर्स एवरीथिंग हैपेंस इन द सोसाइटी राइट तो ए सब को नै कि हमें विचार करछे जे आमे को भलिया पॉलिसी को फॉर्मुलेट करबा हमर इंडियन इकोनॉमी राइट अच्छा मु जो तुमको प्रथमे कहितला पहिले जे आमे कोन प्रोड्यूस करूचे आउ ताको डिस्ट्रीब्यूट केमिति करबा आउ ताको हमें केमिति कंज्यूम केमिति करबा राइट तो सेठी ଗୋଟେ बेसिक जिंस थिला पहिले गोटेला प्रोड्यूस distribute and consume or consumption right so what to produce को भलिया आमे जिंस को प्रोड्यूस करबा whether it is a agriculture product or it is a industry based product right कौन प्रोड्यूस करबा what to produce then how to distribute means what how you will get that product a product हम केमिति पाई परिबा how to make it whether it is capital intensive or labor intensive चाष तो करबा ठीक अछि किंतु सेटा लोकन को द्वारा करबा ना मशीन द्वारा करबा राइट जदि सब जिंस मशीन रे कर दबा ताहले आउटपुट तो अधिक हे जिवो किंतु लोक तो इन्वॉल्व हे परिबे ना आ जतो लोक इन्वॉल्व हे पेनी ताले इनकम को आसी आ मशीन्स भी करिया पई तो मशीन करिया पई तो हमर सेति टेक्नोलॉजी भी दरकार आ पैसा भी दरकार सो खाली जानिले हबोनी जे आमे इकोनॉमी को केमते डेवलप करबा जानिया पड़ो जे को भलिया डेवलप करबा तो लोक जेते अधिकार अधिका इन्वॉल्व हेबे सेति के हमर इकोनॉमी ग्रो करबो इति पई बिकॉज़ वी लिव इन ए लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल इकोनॉमी so what kind of agricultural model we have labor intensive not capital intensive whereas the USA model is your capital intensive means what many or more you'll find your machines than the labor forces right mechanized farming but here we have manual agriculture you will see in many villages or the most of the Indian societies agricultural fields okay so another kind of agriculture is still important because maximum workforce is working over there but the largest share of GDP comes from these services that is the irony of our economy right growing digital economy and startup ecosystem but nowadays we see a drastic change in our economy जोटे कि तमे देखुथुओ जे नुआ नुआ स्टार्टअप सिस्टम सब आसुची राइट आगुरु आमे जति कि आमे ट्रांजैक्शन करूथिले इकोनॉमी रे सब मैनुअल ट्रांजैक्शन थिला कि पैसा जति कि थिला नोट रे ट्रांजैक्शन थिला बर्तन डिजिटली आमे सेटा को ट्रांजैक्शन करे पे चेष्टा करछे फोन पे पेटीएम ये सब कोरोना परठू अधिका मात्रा रे बढ़छि दैट मींस व्हाट we started trying an ecosystem where the new startups are coming in the market where the digital economy is getting promoted right so this is nothing but your digital economy and the startup ecosystem is another essential feature of your Indian economy okay regional disparities and income inequalities remains the challenge right तो सब जगह समान कथा नहीं regional disparities माने कौन गोटे रीजन को आउ गोटे रीजन इंडिया गोटे देश किंतु ता भीतर डिफरेंट रीजन डिफरेंटली ग्रोन राइट सेमानकर इकोनॉमिक स्टेटस सब जगह समान नहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर वेस्टर्न और द सदर्न स्टेट समस्त कोन इकोनॉमी समान यदि स्टेट रो हम इकोनॉमी देखिबा नो नॉट सर्टेन ट्राइबल सोसाइटी अछि ता भितरे तमरो डेजर्ट एरिया अछि ता भितरे फर्टाइल लैंड एरिया अछि ये सब को नहीं कि तमरो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों को अलग अलग हां कि नहीं पर कैपिटा इनकम इज डिफरेंट for different states that is why we can see income inequality and regional disparity हैला कोडे इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी महाराष्ट्र इस सब रीजन रे कि बैंगलोर बढ़िया एरिया रे कि कर्नाटक एरिया रे सर्विसेज बेस्ड सेक्टर राइट बैंगलोर आईटी हब
तो सेठी तमे प्रायतः कोन देखियो समस्तकर इकोनॉमिक स्टेटस जदी लिंक थो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज लिंक्ड टू द सर्विसेज सेक्टर और द आईटी सेक्टर तो ऑब्वियसली से का पर कैपिटा इनकम अधिका हबो हां कि नहीं महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अच्छी ऑब्वियसली अधिका अहमदाबाद इंडस्ट्री अच्छी कॉटन मिल इंडस्ट्री अच्छी अधिका हबो आम लोक जाकि सेठी काम करछथि जोटी कि आमे एठी काम करछु पर नाही काहे कि बिकॉज़ वी लिव इन ए स्टेट वेयर agriculture is given more importance than your industries जदि हमर एठी जदि मिल इंडस्ट्री थाता कॉटन इंडस्ट्री थाता डेफिनेटली लोक हमर एठी थाते हां कि नहीं आमे जोगे पारु नाही बोली सेठी जाउछन से माने तो पर कैपिटा इनकम हमर केमति बढ़ी जिवो बुझियला रीजनल डिस्पैरिटी गुजरात एंड ओडिशा गोटे सिंपल एग्जांपल देली आमे जाउछु सेठी काम करिया पे तो रीजनल डिस्पैरिटी हबो कि नहीं आ रीजनल डिस्पैरिटी आसिला कोन पे ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी कोन पे आसिला दिस इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस हला मु काहे कहूची ना तुमको फॉरवर्ड प्रोसेस रे नहीं गली राइट एबे पुनी पछुआ पछुआ हम जाउछे जे हमर इनकम डिस्पैरिटी इनकम इनइक्वालिटी हला कोन पे ना पछु पछु जाउछे जे हां हमर इंडस्ट्री नाही बोली हमर एग्रीकल्चर पछुआ अछि बोली हला ता सहित अन्य फैक्टर भी आसुची केबे केबे हमर आसी गला साइक्लोन आसी गला केबे आसी गला एलिनो आसी गला सुखा पड़ी गला फेमाइन आसी गला तो एग्रीकल्चर भी जो आपरे में सब तो अधिक डिपेंडेंट अच्छे सी भी जदी फ्रूटफुल न होला तमन एग्रीकल्चर रो हमर जो माने एसोसिएटेड अछन जो माने फार्मर्स अछन व्हाट दे विल डू दे विल से yes or no so in this way the regional disparity is getting increased हला तो गुजरात रे तमे जदी देखिबो सेही पॉपुलेशन थिबो सेही फैसिलिटीज थिबो रिसोर्सेस थिबो किंतु आमे तांको बेले समान हे परिबा नाही एथि पे से माने इंडस्ट्री रे अधिक रु अधिक निजु डेवलप करि सारे आमे से जगह रे पहुंची पारू ना हमर जदी मेनली जदी हम ओडिसा कथा जदी कहबा हमर इकोनॉमी कहा बेस्ड मिनरल्स बेस्ड जति कि माइंस अछि मिनरल्स अछि ता ऊपर ही आमे हम निजु को डिपेंडेंट बने के रखि बुझियला so based on our economic model we can define our economic status our per capita income our standard of living and our income level or the equality or inequality status right so ए सबुर फीचर्स हमरो इंडियन इकोनॉमी रो स्पष्ट जणा पड़छ बुझी होची डिस्पैरिटी कोन पे हला इनइक्वालिटी कोन पे हला नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा दीटा टर्म अछि पिले गोटे हला ग्रोथ आ गोटे हला डेवलपमेंट बेसिक इंग्लिश हला इकोनॉमिक छाड़ा कौन ग्रोथ और डेवलपमेंट ग्रोथ माने भी बढ़िबा डेवलपमेंट माने भी बढ़िबा हां कि नहीं सिंपल अच्छा तमे जतले छोट थिला तम हाइट थिला फुटे 2 फुट 3 फुट 4 फुट हे तमे बढ़िला तमे हाइट वाइज भी बढ़िचो राइट वर्टिकली बढ़िचो लैटरल भी बढ़िचो हां कि नहीं तमरो ब्रेन रो ग्रोथ हिची तमरो निजर लंबा बढ़िची कि तमरो ओजन बढ़िची ए सब कोन these are the physical entities of a human being yes or no which is feasible and which is visible तमे देखि पारुछो and that is known as your growth किंतु ता सहित तमे फिजिकली ग्रो करबा सहित तमरो निजर इंटरनल क्वालिटीज भी तो बढ़िची ब्रेन रो डेवलपमेंट भी तो हेची राइट तम पर्सनालिटी भी तो ग्रूम करिची राइट तमे जहा जानिथिलो 5 क्लास रे जे 10 वर्ष समय थिला बेलकू एबे तमे जो अवस्था रे अछ 15 वर्ष 20 वर्ष परे एबे कोन से अवस्था अछि तमरो गुणात्मक मान बढ़िची ये सर नो किछटा देखा जाउची कि देखा जाउची कोन जोड़ा फिजिकल चेंजेस हिची राइट जोड़ा फिजिकल चेंजेस हिची जोड़ा तमरो माइंड लेवल रे चेंज हिची स्पिरिचुअल लेवल रे चेंज हिची तमरो ब्रेन स्तर रे डेवलपमेंट हिची तमरो क्वालिटी ऑफ लिविंग रे चेंज हिची दैट इज इंटरनल और दैट इज नॉट विजिबल राइट एंड दैट इज नोन एज योर डेवलपमेंट this is whereas you can identify this can be identified as your quantity whereas the development can be identified as your quality and quality pile कोड हेले देखा जाए नाही क्वांटिटी देखा जाए yes or no गोटे ड्रेस मटेरियल को तमे देखिले तुमको आखि को भलो देखा जाय पारे
सुंदर देखा जाय पारे तुमको फिट होची कि ना तुम जानि परिबो द डिजाइन पैटर्न कलर एवरीथिंग यू कैन चूज राइट बट unless until you touch unless until you wear unless until you feel right you can't say that is your cotton or silk or what kind of material you can wear and you can be comfortable with is that clear so what is the quality of that material देखा जाऊ सेटा केवल महसूस करा जाउछ बा केवल फील करा जाउछ हां कि नहीं तो जोड़ा देखा जाउछ क्वांटिफाइड हला सेटा उस तमर क्वांटिटी और द ग्रोथ और द क्वालिटी दैट इज योर डेवलपमेंट सो सेटा जदी आमे गोटे मनिषो पई देखितले गोटे नॉन लिविंग पई देखितले वर्तमान हम देखबा इकोनॉमी पई हां कि नहीं देखो ग्रोथ माने कोन इकोनॉमी increases in real GDP or real per capita income over the time. Okay, quantitative concept. Yes, growth is a quantitative concept. कही सरची quantitative concept. मु देखिबा पूरा एग्जांपल सहित देखिबा जे डेवलपमेंट और ग्रोथ विथ डिफरेंस कोन व्यस्त होनी. Example, India's GDP growth rising from one year to the next. Obviously, GDP माने कौन पिले gross domestic product. What is this? Gross domestic product. Okay, what is gross domestic product? गोटे देश भितरे जेतिकी goods and services तैयारी होची that is known as your gross domestic product. That's it. What is product? Goods and services. All the goods and services produced within the territory of the nation is known as your GDP. GDP विषय रे हमें आगु कौरी बढ़िया से पढ़ी ना types of GDP, the kind of calculation it has, right? ये सब जिन हम पढ़िया व्यस्त होनी खाली जानो जे GDP माने कौन गोटे देशर इनकम जानिया पाइले हमें GDP भलिया गोटे टूल को यूज करछे सिंपल मोर इनकम केते जानिया पाइ कि तमर इनकम जानिया पाइ गोटे लोकर इनकम जानिया पाइ हम कोन कहबा से केते टका कमाउची देशर इनकम जानिया पाइ हम कोन कहबा केते टका देश कमाउची देश केते टका कमाउची जेती गुड्स एंड सर्विसेज तैयारी होची ना सेटा ही तो तार इनकम हो कि नहीं जेती कि नुवा जिंस आसला देश भितरे सेटा होची तार इनकम राइट बस ये हला तमरा गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी तो जीडीपी सब वर्ष बड़ी बड़ी जाए सपोज जीडीपी 100 टका अछि गोटे देशर ता पर वर्ष हला 110 ता पर हला 150 ता पर हला 200 जीडीपी बड़ी बड़ी जाउछि ना किंतु एबे देख पिले ये 100 रु 110 मनकर लोक संख्या केते 50 जन पीपल तो पर कैपिटा इनकम केते हबो पर कैपिटा इनकम केते हबो टोटल अमाउंट ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन टोटल अमाउंट केते 100 टका टोटल पॉपुलेशन केते 50 टका 2 टका कोन 2 टका कोन पर कैपिटा इनकम मु जदी देखिबी एबे ए जो 100 टका रु आमे बड़ी बड़ी धीरे धीरे 200 टका पाई जाइछे ए 200 टका हेछि केमति पिले ऑब्वियसली हमर गुड्स एंड सर्विसेज बड़ी थिबो किंतु कथा लाया ए जो 100 टका रु 200 टका जो आमे बढ़ेछि जो डबल द इनकम आमे करिछि गुड्स एंड सर्विसेज भितरे ता भितरे सबुठु लिमिटेड रोल अछि ता भितरे रोल अछि केवल गोटे लिमिटेड लोक ए एग्रीकल्चर सेक्टर जो 70-80% लोक काम करछथि सेमानक रोल नाही तुम कहितिला से माने सेमती अवस्था रछन जेमती 50 वर्ष तळे थिले कि रोल कहार आसला एलपीजी रिफॉर्म पर जो आईटी सेक्टर ग्रो कला एलपीजी रिफॉर्म पर जो सर्विसेज सेक्टर ग्रो कला राइट जे माने व्हाइट कलर जॉब रे जो माने अछंती जो माने हाई प्रोफाइल रे अछंती जो दोस डॉक्टर्स इंजीनियर्स दोस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दे ग्रो एक्सपोनेंशियली किंतु से लोक के जण अछन बहुत कम 5% 10% बहुत राइट तो सेमानकर इनकम को से माने एतिकी बढ़ाई देले जे देशर इनकम भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करी गला हैला किंतु पर कैपिटा इनकम केमति बाहरियो सब लोक को नै हां कि नहीं
अच्छा हेले ए जो 2 टंकाटा थिला 100 टंका थिला बेलू जेतेबेले 200 टंका हला ये कौन हला पिले 200 बाई सब लोक 4 टंका देखिए बोले ये कौन हला इनकम डबल हला किंतु जो चासी 50 वर्ष तले 20 वर्ष तले जो ऋण रे बुड़ी थिला से चासी इनकम एबे भी सेतिकी ही अछि सी बढ़ीनी सी डबल हेइनी एटा केवल क्वांटिटी रे हमको जणा पड़छि से डबल हेइ सक हला मोर अवस्था जहा थिला 20 वर्ष तले मु सेतिकी ही अछि कारण मु से सेक्टर को बिलोंग करछि जोडे की ग्रोथ ही नाही आ सेठी इंडिया रो सबटु मैक्सिमम लोक काम करथि सेटा अछि एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर फिशिंग हला हॉर्टिकल्चर हला एग्रीकल्चर हला बेसिकली द अलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर आ से माने एबे भी से चासी आत्महत्या रछन देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज नेवर बीन चेंज्ड what is changed only the socio-economic condition is changed for the services sector industry sector the tertiary and the secondary sector तो सेही हाथ गणती अदानी अंबानी एमानक पाई बोली कि जो पैसाटा बढ़ी जाइछि जीडीपी रे सेटा किंतु एक्चुअली रिफ्लेक्ट होउनी से गरीब लोकन को पाई right so what it shows the per capita income is getting increased 2 times whereas that is not the actual figure of your growth of the citizens right so the actual development रे ही जणा पड़ी your quality of life is not changed तमर पैसा बढ़ी जाइछि काहे कि ना कैलकुलेशन सेटा जणा पड़छ कि कैलकुलेशन सेटा जणा पड़छ सेटा काहा पई सेही लोकन को पई जो माने कि बाहर जाई कि विदेश रे काम करछन डॉक्टर अछन इंजीनियर सेमानक प्राइस सेमानक इनकम सेमानक लेवल ऑफ लिविंग सेमानक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट 2 times दैट इज 200 times सेमानकर 200 times बढ़िया जोगु हमर 2 times भले जणा पड़छ किंतु हमें से गोटे ही अच्छे से क्रॉस 1 रे ही अच्छे हमें से गोटे टाइम्स बढ़ी न ऊपर राइट किंतु सेमाने एक्सपोनेंशियली दिन को दिन निजको बेटर कर कर नउछ बुझियला सो वेयर यू विल सी योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग in your actual development. That is why I told growth signifies your quantitative analysis, that is 2 times, whereas development shows your quality of living. तमे सेही ऋणग्रस्त अछ तमे सेही आत्महत्या करूछ तमर सेही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेतिकी ही अछि तमे सेमिति अनएजुकेटेड अछ तमे सेमिति पुअर अछ इलिटरेट अछ that is your quality of living. So which defines your actual figure of your economic development, not your economic growth. बुझियला so broader concept including growth plus improvement in the living standards. जो पर्यंत मोर छुआटी प्राइवेट स्कूल को जाई पारुनी मु अदानी अंबानी से तो काहे कंपेयर करिवि मु जदी प्राइवेट हॉस्पिटल को क्लिनिक को जाई पारुनी मु अदानी अंबानी से तो काहे कंपेयर करिवि मो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़िनी मु तो से पखाला कंसार ही अछि मते न्यूट्रिशन पाई बोले कि भाबिया ही दरकार नहीं एबे न्यूट्रिशनिस्ट बाहर चंदी सोसाइटी रे भाई मु मोर पेट तो पुरे तापर मु भाबिबी जे मोर न्यूट्रिशन केति दरकार अछि काहा को दरकार अछि केति परिमाण रे खाइरा अछि केति कैलोरी इनटेक करियार अछि सेटा परे आसीओ आको पेट तो पुरु मु सेही अवस्था अछि दैट इज माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हला this is your improvement in the standard of living right includes the education elements of the society elements of the development you see what are the elements of the development मोर एजुकेशन भलो हबो मोर एजुकेशन हेल्थ भलो हितबो जेंडर इक्वालिटी थिबो आजिका डेट रे भी झियो मानु को पाठ पढिया पे छडा ही पर नाही राइट आजिका डेट रे भी पहुंची फोर्स्ट लेबर अछि चाइल्ड लेबर अछि आजिका डेट रे भी चाइल्ड मैरिज अछि ता माने आम मनर चिंताधारा एबे भी अछि जे पो झियो अलगा कोन पई अछि चिंताधारा जेहेतु आमे लिटरेट न हो हाँ कि नहीं आमे जदि लिटरेट न हो ता माने आमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आमे केबे बढ़ाई परिबा कि केबे बढ़ाई परिबानी आमे से जो झियो को आमे बाहर को छाड़िले ही नहीं जो झियो को आमे पाठ पढेले नहीं ताकू छुआ बेलू ताकू बाहागर करि सारलेनी तार बेसिक राइट्स रो हमको ताकू में वंचित कले आमे केमते एक्सपेक्ट करबा जे से झियोटी जाय कि आगो को कोन किछि भलो करि परिबो हम इकोनॉमी गोटे एसेट ही परिबो गोटे से फैमिली पे एसेट ही परिबो नो वे से तापे एसेट ही परिबोनी से फैमिली पे ही परिबोनी तार नेक्स्ट जनरेशन को मते से भलो से ता पे केयर नहीं परिबो नाही ऑब्वियसली से जदी लिटरेट हैला ता पर ही जाय कि ता फ्यूचर जनरेशन ता पे किछि करि परिबो राइट
तो एठी कौन होला जेंडर इनइक्वालिटी कथा आसिला पोवर्टी रिडक्शन जदि मु लिटरेट ही नहीं जाई गोटे काम करि परिबी चाकरी करि परिबी ताहाले मु पोवर्टी को केमति रिड्यूस करबी मु सेही ट्रेडिशनल वे रे ही फार्मिंग करबी से ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रे ही बंचिबी आउ मो निजरो स्टैंडर्ड लेवल को बढ़ाई परिबी नाही सो दीज आर द हिंड्रेंसेस ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट जदि मोर डेवलपमेंट दरकार ताहाले मते होलिस्टिक डेवलपमेंट दरकार मते भलो एजुकेशन दरकार भलो हेल्थ दरकार मोर जेंडर इक्वालिटी थिबा दरकार पोवर्टी को रिड्यूस करि परतबा दरकार आउ लिटरेट हेबा दरकार राइट so qualitative this is nothing but your qualitative analysis and quantitative changes obviously quantity तो रही भाई तमे जदि तमर स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ेलो तमे जदि लिटरेट हेलो ताले ऑब्वियसली तमर क्वांटिटी तो बढ़ी भाई हला तमे जदि गोटे गोटे छुआटे निजर मोर बौद्धिक विकास करूची निजर इंटेलेक्चुअल को बढ़ाउची ता माने कोन सी को फिजिकली से ग्रो करनी दैट इज मस्ट क्वांटिटी इज मस्ट बट with that quantity quality is also essential right so quantity सहित जतेबेले क्वालिटी को मध्ये देखा जाए सेतेबेले हम कोन देखिबा डेवलपमेंट आमे देखिले कि स्कूल रे समस्त पाठ पढुचोन आमे बेसिक राइट समस्त कर अछि फंडामेंटल राइट्स अछि आ समस्त पे गवर्नमेंट स्कूल हेला समस्त स्कूल गले सेइथुर देखो जे रिजल्ट ऑफ दैट स्कूल केते जण ड्रॉप आउट अछंती परीक्षा ही दउ नाहंती गवर्नमेंट स्कूल रे केतन फर्स्ट क्लास अच्छी सेकंड क्लास अच्छी 8th 9th क्लास रे पढुवा पिला को निजर ना साइन करिया पे जणा नै whereas in the private schools you will find the better education quality of education right तो खाली देखिले ए कथा हम देखिला बन केते जण पिला स्कूल को जाउचंदी आ पास करचंदी ताठो अधिका इंपोर्टेंट जे से माने केते क्वालिटी एजुकेशन पाउचंदी दैट इज योर डेवलपमेंट राइट एग्जांपल better schools hospitals employment opportunities बुझेला the difference between your growth and development okay now next growth versus development सब दिन सब पैसा चिपिले खाली लिखा है slides you will be provided the slides and you will go through it you will find everything okay so growth increases the output or the income development growth plus social welfare खाली पाठ पढिला बनी मु पाठ एक्चुअली केते भलो पढिछि पाठ को एक्चुअली केते बुझिछि आ पाठ को केते की कामर लगे पड़छि सोसाइटी पे दैट इज इंपोर्टेंट दैट इज योर क्वालिटी राइट सो सोशल वेलफेयर पे मो पाठ कामर लागो छै कि नै राइट मु डॉक्टर तो पास करि छी किंतु मु जानि पबनी जे प्रकृति रे बेसिक जो जिंस अछि एलिमेंट्स अछि एमबीबीएस में ताकु मु ही जानि पबनी जे मते ऑक्सीजन सिलेंडर चाली छी कि नै होछि एग्जांपल चारेड होछि तो सेटा कोन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन राइट इफ योर क्वालिटीज is not utilized by the society for the welfare then what is the need of or what is the use of your education right growth may occur without development yes obviously growth हेई परिबो without development एटा हमें देखि जाय छै खाली पाठ पढला बनी हमें पाठ पढा को केति की सोसाइटी पाई बोली यूज करि परछे that is needed right so development generally requires sustainable growth what is sustainable growth is nothing but simply a growth with the factor or when you grow with you see the growth of the future generation आमे केवल आमर जहा लिमिटेड रिसोर्सेस अछि कोल हला की ऑयल हला पेट्रोलियम हला ए सब को आमे यूज करछे आम पाई बोली के राइट किंतु आमे सबुडा तो छाड़ देला आम फ्यूचर जनरेशन किछ यूज ही करि परिबोनी तो सेते आमे फ्यूचर जनरेशन को आखि आगे रखी की आमे आमर मध्य रिक्वायरमेंट को फुलफिल करबा दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट you sustain for the future right and you look forward your development as well so sustainable development right human development index जहा जहा हमें पढ़िले human development index गोटे human रो development माने कोन क्वालिटी प्लस क्वांटिटी इंडेक्स ये गोटे मेन इंडेक्स जोड़ा की पब्लिश हुए आउ आर फीचर्स क्राइटेरिया कोन कोन आउ कोउटा को आमे आखि आगे रखी की देखु यूजुअली पिले परीक्षा रे आसीची ओसीएस को एएसओ को सिजिल को बहुत गुरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ए जो क्राइटेरिया गुडा को से माने कोन करंती पचार दियंती ऑप्शंस रे तुम जे जानि नथियो ताले भूलभाल कर दो हला क्वालिटी हम कोन कोन देखछे प्रिपेयर्ड बाय दी को के देखो यूएनडीपी
United Nations Development Program, one of the wing of your United Nations. So this is the United Nations Development Program which defines this criteria for the Human Development Index and which releases this index every year and measures the human development using the three criteria, that is your life expectancy, education, per capita income, right? Higher HDI indicates better quality of life, obviously ए इंडेक्स टा बढ़िले ऑब्वियसली तमर क्वालिटी ऑफ लाइफ मते बढ़िबो हां कि नहीं अच्छा ये कौन देखुची एजुकेशन तम जानि छे पर कैपिटा इनकम तम जानि छे व्हिच डिफाइंस योर पर कैपिटा इनकम कौन दबो पिले ग्रोथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस बट खाली क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो काम होबनी हम क्वालिटी देखिबा माने कोन देखिबा एजुकेशन अछि ता सहित लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने कोन आमे केते दिन अधिका बंचुचे केमिति बंचुचे राइट हमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी केते 70 65 years जापान रो 110 years राइट सब देश लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग अछि कोन पे अछि अच्छा ये खाली आकु ही काहे देला अन्य कुडा काहे कि नेलानी काहे ना आ थ्रू रे बहुत गुडे फैक्टर ये कवर कर दोछ दिस इज ए ब्रॉड डोमेन भाई जदी तमे गोटे हाइजीनिक एनवायरनमेंट रे बंचुचो जदी भलो खाइबा खाउचो शुद्ध हवा पाउचो भलो पानी पिउचो पीसफुल एनवायरनमेंट रे बंचुचो राइट स्ट्रेस कम नै कि बंचुचो रिसोर्सेस बहुत अवेलेबल अछि तमरो अनएम्प्लॉयमेंट पे चिंता ही नहीं सब एम्प्लॉयड अच्छ भल हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलुची तमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िबो कि नहीं तो एते गुडा को फैक्टर भल हैला बोली कि तमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने जीवन काल मध्य वृद्धि पाउची माने एवरेज लाइफ द ह्यूमन बीइंग एवरेज लाइफ इज योर हाउ मच दैट इज योर 70 और 80 और 90 और 40 अफ्रीकन नेशन से तुम देखिबो बहुत कम एज रे मध्य ए सब असुविधा काहे कि ना सेठी हेल्दी एनवायरनमेंट नाही हाइजीनिक एनवायरनमेंट नाही जेते सब एपिडेमिक डिजीजेस सब सेठु बाहरची राइट सिचुएशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मते बहुत कम सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आल्सो विल बी वेरी लोअर इज दैट क्लियर right so life expectancy is one of the major your criteria for your human development index बुझियला तो तीनटा क्राइटेरिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम बुझियला SDA example and exam facts. Countries with high SDA generally have the strong health and education systems. Quite natural. मत इतने किसी बुझा दरकार ही नहीं. जार SDA अधिका, सी अधिका developed. India's SDA ranking is frequently asked in the competitive exams. इटा सब बुले तो मैं देखिबो, कहीं ना सब बुले change हुए, हला? तो SDA index सब बुले change हुए कि बाहर को तुम जानी सालोनी static data, किन्तु सब बुले change हुए जेतु current affairs नो से news तो मैं देखी बेरी, okay? So it focuses on the people, not just economic. That means what? The quality of life, not just quantity of life. Is that clear? तमे अधिक टंका कमाउ थाओ पर पिले कि जदि शांति रे सोही परुनो जदि तमर हेल्थ इश्यूज अछि ताल से अधिक टंका कमार किछि लाभ अछि कि ग्रोथ इज देयर योर इकोनॉमिक ग्रोथ इज देयर माइक्रो इकोनॉमिक्स हला मु जदि मो निजर इकोनॉमिक्स कथा कहि किंतु मोर पीस नाही मोर हेल्थ भलो नाही त माने मु डेवलप्ड नहीं सिंपल एमिति मन रखो तो मु मन रहि आराम से हला सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स मोर निजर नीड्स को फुलफिल करबी without compromising the future generation मु कोयला गैस पेट्रोलियम जते रिसोर्सेस हला पानी सब जमी सब यूज करी कारण मते बंचिबार अछि किंतु मो परे बी जनरेशन आसीबो से मानकु भी बंचिया पई देबार अछि so these are the limited resources that I have to keep for my future generations as well so I need to fulfill my requirement without compromising the future generations requirement that is one of your sustainable development popularized by the এটা important play Brundtland report आ द्वारा प्रथम तर पई ए sustainable development रो concept को coin कराइतला ए term को coin कराइतला ओके balance economic growth social inclusion and environmental protection हैला ता माने कोन भाई मु तो ग्रो करिवि मोर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करिवि इंडस्ट्री एस्टैब्लिश न करले मु ग्रो करि परिबि नाही यस और नो किंतु इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कला परे मते देखियो पड़ियो जे से इंडस्ट्री में खाली धनिक सेंटर लोक रहिला हबनी राइट तमने इनकम इनइक्वालिटी आसी जिवो मते कोन करियार अछि समस्त को शामिल करियो पड़ियो सब वर्गर लोक को शामिल करियो पड़ियो मु बैंकिंग सेक्टर कली पिले
बैंकिंग सेक्टर रु लोकंकर सुविधा हला कोन ना से माने पैसा रखि पाले पैसा को ग्रो करि पाले गोटे 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 फॉर्मल सेक्टर को से आसी पाले बट द थिंग इज जेते बेले से बैंक ता केवल शहर रहिला से गां गहर लोक जानि पाले कि इलिटरेट लोक जानि पाले कि रिमोटेस्ट एरिया रे जो लोक अछंती पहाड़िया एरिया रे जो लोक अछंती केबिक एरिया रे जो लोक अछंती से जानि पाले कि से मान ता फायदा उठै पाले कि तो मते समस्त को नेकी चले गुरु दैट इज व्हाई वी नीड द सोशल इंक्लूजन सोसाइटी रो सब एलिमेंट रिमोटेस्ट एरिया रे पहाड़िया एरिया रे भी जो लोक अछि गां गहर रे जो भी जो लोक अछि सी भी बैंकिंग फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर को एक्सेस करि परिबो निज टंका को ग्रो करि परिबो इंस्टीट्यूशनल लोन भी नहीं परिबो राइट सो सोशल इंक्लूजन इज आल्सो नीडेड राइट आउ ता सहित एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हबो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट करबी मते 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 ग्रो करिवार अछि मते चाइना टू जापान को मते देखिबार अछि आमे मध्य डेवलप्ड आमे मध्य ग्रो करूचु राइट इंडस्ट्री एस्टाब्लिश करबी काहे कि ना आमे ग्रोथ चाहूचे इकोनॉमिक इक्वालिटी को आमे इकोनॉमिकली आमे जीडीपी को बढ़िया पे चाहूचे ता अर्थ एया नुह जे आमे गच्छ काटी के सेटे इंडस्ट्री एस्टाब्लिश करबा आउ तादर जो पोल्यूशन होची आम एनवायरनमेंट को आमे निजे खराब करिया जोटा कि हम फ्यूचर जनरेशन पे असुविधा आ सेटा ही कहै सस्टेनेबल डेवलपमेंट जदि आमे बंचिबा एबे ता माने आमे से कथा को कंप्रोमाइज केबे भी करि परिबानी जोटा कि हम फ्यूचर जनरेशन न पाइ तो शुद्ध एनवायरनमेंट रे आमे बंचिबा हम भविष्यत जनरेशन को भी बंचिबा पई दबा राइट दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइट सो एनवायरमेंटल कंसर्न को मध्य आखि आगे रखिया पड़िबो इंक्लूडिंग योर जीडीपी ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्री को एस्टाब्लिश करिवा ग्रोथ हबो ता सहित आमे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मध्य देखिबा एनवायरमेंट को मध्य केमती शुद्ध रखिबा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मध्य केमती करिबा एयर पोल्यूशन को आमे प्रिवेंट करि परिबा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करि परिबा जो पोल्यूटेड वाटर इंडस्ट्री रो बाहर ताको केमती आमे कोन करि परिबा फिल्टर करि परिबा डेस्टिनेशन रे रिवर रे सिस्टम रे आमे छाड़ीबा पूर्वरु ए सब कोन एनवायरमेंटल कंसर्न्स फॉर दी कोन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ योर इकोनॉमी राइट सो ए सब जिंस देखिया पड़ो ग्रोथ भी हबो सोशल इंक्लूजन भी हबो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हबो ताहाले जाई कि गोटा होलिस्टिक डेवलपमेंट हबो जोटा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो गोटे पार्ट बोली हमें कहि परिबो बुझियला हाउ यू मेंटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट you maintain the sustainable development with the social inclusion industrial development and the environmental concerns as well hala this is how the holistic development you can ensure okay so practical examples for sustainable development yes tum jani cho pile renewable non renewable resources अछि जेते हमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को हमें यूज करबा सेते पोल्यूशन अधिक हबो सेति के हम पे असुविधा हबो तो सेति हमें रिन्यूएबल यूज करबा माने सोलर टाइडल विंड हाइड्रो ए सब एनर्जी को हमें अधिक अधिक यूज करबा सो दैट द पोल्यूशन विल बी लेस एंड इट विल बी मोस्ट हैबिटेबल एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ राइट सोलर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सबटो अधिक प्रमोट करा होची रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अधिक प्रमोट करा होची पानी को एमती नष्ट करबानी जो वर्षा पानी अछि ताको सदुपयोग करबा राइट तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग राइट अफोरेस्टेशन अधिक अधिक गछ लगेबा ता द्वारा कि कोन हमर एयर पोल्यूशन के प्रतिरोध कर परिबा जो जो ग्लोबल वार्मिंग अछि ताको हमें प्रिवेंट कर परिबा पर रिड्यूस कर परिबा ग्रीन हाउस गैसेस को राइट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर माने कोन जोड़ा कि हमर कम रु कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन बा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हे परिबो सी गुडा को इंफ्रास्ट्रक्चर होची ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर राइट एबे सब देखुथो सुनुथो पिले जे हमर फ्लेक्स फ्यूल असला फ्लेक्स व्हीकल असला त माने कोन बोथ पेट्रोल विल बी यूज्ड एज वेल एज द इथेनॉल विल बी आल्सो यूज्ड काहे कि ना हमें वर्तमान धीरे धीरे हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल मैकेनिज्म आड़ को शिफ्ट हेले इलेक्ट्रिक व्हीकल आड़ को शिफ्ट हेले जीरो पोल्यूशन को शिफ्ट हेले कार्बन एमिशन जीरो कार्बन एमिशन को शिफ्ट हेले जते अधिक अधिक जदी गैस आसला एमिशन आसला सेति अधिक हमरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन अब सिंपल कथा हो कि नहीं तो ईवी रे कोन होची कार्बन लेस माने कार्बन सबटु कम एमिशन होचंदी सेति हमली के एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट की रहउची सिंपल कथा सेति ईवी पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट के आछुंती सो दैट सब्सिडाइज्ड दर रे लोक माने एनकरेज they will be encouraged the people will be encouraged to buy more and more EV vehicles so that the pollution will be less and you will live in an environment where it is your carbon free
carbon neutral environment, right? So India's International Solar Alliance initiative is one of the example for your sustainable development, um, right? So next we'll see important economic indicators. Indicators, economic indicators ଭିତରେ ଆମେ ପଢିଲେ ପିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ GDP growth rate, per capita income, inflation rate ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ, unemployment rate, SDI ପଢି ସାରିଲେଣି, poverty ratio ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା ପଢିନି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଖାଲି ଜାଣ ଯେ ଏ ସବୁ what is inflation ପିଲେ general rise in price level is called inflation simple କିନ୍ତୁ what are the kinds of inflation, how this inflation happens, right? How it can be controlled, what is the government's role, what is the RBI's role, everything will include in our next classes. In upcoming classes, you will see many more concepts regarding your these indicators and the practical scenarios, how we tackle it, what is the problem, what are the scenarios, how to handle it, everything will see. Okay, खाली ଏବେ ଜାଣ ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ ସବୁ indicators ଅଛନ୍ତି ଆମର economy ଭିତରେ, right? So economic indicators means macroeconomic, okay, that you should know, right? So poverty रे मध्ये हमें poverty रे पढ़िबा kind of poverty, what are the communities, they've defined the poverties and their definitions, right? How to reduce it, right? What are the mechanisms, what are the initiatives, what are the schemes which are implemented by the government of state government and the central government. Okay. This is nothing we have already seen. Practice questions, explain the comparative index. Okay, we'll move forward your MCQ. Okay, we'll see few MCQ questions. It will take hardly 10 minutes to finish your 20 to 25 MCQs. Okay, insert right. What's your aim? Add code. Okay, very simple questions pile ame jaha padhile ta upare questions, unless until you appear you attempt the questions, MCQ questions, you will not get confident, and what you have learned, that will be fruitful only when you attempt your mocks or the questions. Okay, so few questions we will see now. Okay, you are always welcome to attempt the mocks and uh, you test your knowledge through MCQs. Okay, so without wasting any time, we will start the MCQ number 1. Economics is primarily the study of, no doubt your answer is written in the bottom, okay, but you try to understand the concept, right? That is important. ସବୁଠି ତ question ର answer ନଥିବ, obviously ତମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ answer ଦେଇଛି no doubt, but you try to understand what is the logic behind it. Okay, so now see, economic is the primary study of what? Scarcity and the choice, right? That means what? Scarcity and choice. ମୋ ପାଖରେ ଯାହା resources ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କୋଉ ଭଳିଆ manage କରୁଛି, that is only the art of economics, right or not? That is the social science, how to manage and handle the resources available in your society, right? Obviously resources is always scarce. Resources केबे हेले पिले तम पई mines हला, minerals हला, कि water resource हला, कि तमरा forest cover हला, everything is limited in number or amount, yes or no? सब जिंस लिमिटेड नहीं अछि. हम पाखे वाटर रिसोर्स हला, माइंस हला, जहां भी हमें रिसोर्सेस को नहीं कि हमें बंचुचे, ये सब लिमिटेड. But the choice lies with us, how we are going to use that resource. मो पाखे रिसोर्स पानी अछि, मु पानी को केमिति यूज करबी सेटा मो ऊपर रही. Yes or no? So that is our wise choice, due to which we want to get a sustainable development with that scarcity of resources, right? So this is, economics is nothing but the science of the scarce of resources and the choice how to handle and how to manage those resources. Clear? Okay. Who defined the economics as a science of scarcity? This is a factual question, play. Just remember, okay? No need to, nothing is there to elaborate, okay?
Next, microeconomics deals with micro means small, small means individual. Simple. Okay. Next, macroeconomics studies the entire economy. Yes, obviously individual. So micro regular one farm, one market is a small entity. So obviously it is your micro. Okay. And when we're talking about the entire economy, the nation's economy, macroeconomics simple. Hala? तमे ऑप्शंस थ्रू रे तमे एलिमिनेट करि परियो पले देयर इज नॉट रॉकेट साइंस देयर इज नो रॉकेट साइंस ओके नॉट ए स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स नॉट ए स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ओके बहुत सिली क्वेश्चन गोटे इथरे माने मते अधिक किछ नाही प्रोडक्शन हम पढिचे कंजम्पशन पढिचे डिस्ट्रीब्यूशन पढिचे एस्ट्रोनॉमी इज नोवेयर रिलेटेड टू इट ओके सो दैट इज द आंसर in a capitalist economy the resources are mainly owned by capitalists private जोडे कैपिटल कथा असला मोर प्राइवेट मन बुझिबो प्राइवेट कथा असले यूएसए कथा आसीबो राइट बाकी सब फीचर्स गला हम पढि सरचे कोन हम सेठी प्ले प्राइवेट इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट कोडी आसीबो सोशलिस्ट इकोनॉमी एनजीओस ए सब किछि कोवर रिलेटेड नै नो पिले तमे माइक ऑन करी कहि परिबो हला आई कैन हियर यू ओके यू कैन इंटरेक्ट विथ मी आई कैन हियर यू आई व्हाटएवर आई से यू कैन आल्सो respond to that okay next the main motive in a capitalist economy. The capitalist economy is what? Private owned entities, right? So what is the main motive? Profit. Equality, welfare, or planning. The features of the socialist economy, right? आमे वेलफेयर करिवु आमे लोक को पई भलो काम करिवु कम दाम रे हमर गुड्स एंड सर्विसेज को जोगेबु सेंट्रल प्लानिंग हम माने किए गवर्नमेंट ही प्लान करिवो किंतु आर ऑपोजिट सब गुड थिला प्राइवेट रे आउ सेटा होची कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वी नो दैट राइट which country is commonly cited as a socialist economy क्यूबा पढिथिले ना आ यूएसएसआर पढिथिले मन पडची आ यूके ऑस्ट्रेलिया ए सब कोन ए सब हमरो ये होची तो मिक्स्ड इकोनॉमी एमन दे रहउचंदी सेही कैपिटलिस्ट और मोर ओवर wherever it is needed that is also mixed okay socialist economy is emphasizes for what social welfare socialist पर सोसाइटी को ऊपर रखा हो सो सोशल वेलफेयर को ऊपर रखा हो सिंपल बुझिउची ना नहीं चंद्रशेखर सचिन प्रणति ज्योत्सना अभिषेक यू कैन रेस्पॉन्ड ओके वेरी गुड थैंक यू इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज किछ कहया दरकार नै प्ले मिक्स्ड इकोनॉमी ओके वेरी गुड very simple questions पिले काई ना हम स्टार्ट करछे सेते बहुत सिंपल क्वेश्चन अछि किंतु मन रख ए क्वेश्चन सु परीक्षा आसी से हला सो सिंपल अछि ता माने नो जे भाई परीक्षा आसीनी कि आसीबो नाही ओके सो मिक्स्ड इकोनॉमी कंटेन्स पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप दिट जक रहइबो राइट which sector contributes the largest share to india's gdp yes this is somewhere you need to apply the logic मु कहितिला एग्रीकल्चर सबटु अधिका लोक अछंती किंतु कम आउटपुट आछी सबटु कम कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी अछि बट सर्विसेज सेक्टर रे कम लोक अछंती किंतु सबटु मैक्सिमम जीडीपी कंट्रीब्यूशन अछि बुझिला सेतने डॉक्टर्स इंजीनियर्स बैंकर्स आर हैविंग द luxurious lifestyle they are having the highest income level they are having the highest standard of living हला सर्विसेज सेक्टर the largest contribution to gdp जदि कंट्रीब्यूशन आसला ताहाले सर्विसेज सेक्टर आसीबो पिले बट whereas the population contribution आसला जदि सबटु अधिक population कोड जदि इन्वॉल्व अछथि लेबर फोर्स अछि that is your agriculture or the primary sector मन रख जीडीपी कंट्रीब्यूशन आसला सबटु मैक्सिमम के सर्विस मिनिमम primary sector or the agriculture right economic growth refers to quantitative quantity टा कोड जणा पड़िबो नंबर कोड आछि जीडीपी रे बस इंक्रीज जीडीपी ओके ए जो हेल्थ हला एजुकेशन हला एनवायरनमेंट हला ए सु कार सब पार्ट थिला पिले मन पड़छि डेवलपमेंट रो ग्रोथ रो नै डेवलपमेंट रो हला economic development includes GDP obviously नहीं development कथा असला जेहेतु कोन आसीबो क्वालिटी कथा आसीबो आ जोटे क्वालिटी कथा असला सेठी कोन होबो इनकम ओनली नो ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यस दीड जगह देखाबो क्वालिटी क्वांटिटी प्लस क्वालिटी राइट चलो
which is a quantitative concept भाई थ्रू जणा ही पड़ुछ ग्रोथ हला ये नुह simple which statement is correct okay growth always means development no obviously no growth is quantity development is quality no development always includes जोड़ जोड़ always लागू चिपले टिके देखि चाहिए पड़िबो हला development always excludes growth no डेवलपमेंट रे ग्रोथ भी शामिल हबो ता सहित क्वालिटी भी रही both the elements so development right growth may occur without development yes obviously growth हेई परिबो without development रे काहे कि ना नंबर तो बढ़ी परिबो किंतु मोर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी बोली मु कहि परिबे नाही मु क्लेम करि परिबे नाही मोर इनकम बढ़ी पारे बट मु स्ट्रेस लेवल मोर पीस लेवल मोर हेल्थ लेवल मोर एजुकेशन लेवल गोटे इलिटरेट भी बहुत प्रकार इनकम करि पारे बट स्टिल ही इज इलिटरेट he is uneducated तो तार क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी परिबो कि ना ठीक अछि तो सेति पई ग्रोथ में अकर विदाउट डेवलपमेंट आल्सो दैट इज करेक्ट ओके HDI Human Development Index published by UNDP United Nations Development Program मन पड़ुची वेरी इंपोर्टेंट पिले मन रखो तार तीनटा इंडिकेटर थिला HDI doesn't directly include direct question from the your previous OCS and the ASO question okay so you cannot ignore उठे की देखि परिबो ठीक अछि previous year question इटा HDI doesn't directly include education life expectancy income inflation obviously inflation नाही आमे देखि सारथिले लाइफ एक्सपेक्टेंसी थिला प्रथमे एजुकेशन थिला आ इनकम माने पर कैपिटा इनकम पढिथिले मन पड़छि ना पर कैपिटा इनकम सेटा को से मेंशन करछि ओके हायर HDI indicates better human development obviously हला बाकी उडा को irrelevant HDI हम पढिथिले ना पहिले human development index human तापे गोटे अलग ही स्लाइड थिला पढिथिले बहुत गुड जिंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन रो डेवलपमेंट पे जो इंडेक्स यूज होछि सिला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओके बुझेला सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस एडा होछि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो डेफिनेशन प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करबा विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन को कोन असुविधा रे न पके कि आमे हमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करबा दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके the Brundtland report is associated with sustainable development because this sustainable development the term itself is coined by the Brundtland report or the Brundtland commission okay where it is written yes SD okay now which is an example of sustainable development भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेतल ही परिबो जेतल हम एनवायरनमेंट को देखि परिबा एनवायरनमेंट को केतल देखिया जेतल रिन्यूएबल एनर्जी को देखिबा रिन्यूएबल एनर्जी कोड अछि पिले सोलर एनर्जी हाइड्रो एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी राइट वेयर द एमिशन इज वेरी लेस कार्बन फ्री एनर्जी राइट एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्बन फ्री एनर्जी राइट सो एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन नो solar energy yes overfishing no air pollution no so this is the answer okay the per capita income is an example of economic indicator yes ऊपर ही अछि ये सब तो जिंस है नहीं okay inflation is generally measured using okay that this is not what we have not studied yet okay so you can skip for the time being CPI is okay तमे इथरु किंतु पिले तमे आमे पढी ने सत्य कथा किंतु तमे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर करि परिबो केमिति कहलो देखो HDI रे इन्फ्लेशन अछि नाही ताकू काटो लाइफ लिटरेसी रेशियो आमे पढितले HDI रे मन पड़छि सेथरे इन्फ्लेशन तो किछि काम ही नथिला काटो लाइफ एक्सपेक्टेंसी HDI रे थिला काटो आ बंचला कोडा CPI stands for consumer price index for the time being you just note it down in the next classes future classes we'll study more about CPI and WPI
wholesale price index and this consumer price index. These are the tools or the indexes used for defining your inflation. जो inflation होची general rise in price level जो पैसा दरदाम बढ़ुची goods and services रो से जो दरदाम बढ़ुची बोली हमें जानूचे केमिति कि सोटे टूल थिबो मु निजको विकसित कहिबी केमिति जानिबी मो ग्रोथ हला बोली केमिति जानिबी ना मोर लंबा बढ़ुची मोर वजन बढ़ुची मोर पैसा बढ़ुची ग्रोथ राइट मु पीसफुल अछि मु हेल्दी अछि राइट मो स्टैंडर्ड लिविंग भलो अछि मु 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 जो एनवायरनमेंट भीतर बचुची मु खुशी रे अछि दैट इज माय क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज माय डेवलपमेंट राइट तो आमे ए सब जिंस को पैरामीटर को देखि कि तो कहउचे ना मोर डेवलपमेंट हेछि कि मोर ग्रोथ हेछि यस और नो ठीक से भलिया गोटे जिंसर दरदाम बढ़ुची केते काहे की बढ़ुची प्रकृति बढ़ुची कि नै ए सब कथा केम जणा पड़िबो इन इन्फ्लेशन right and how you will define inflation there are certain tools there are two kinds of tools one is your WPI and another is your CPI consumer price index and wholesale price index in the later classes we'll study about more about this WPI and CPI and who are publishing the government agencies who are publishing this WPI and CPI right we'll study don't worry but for the time being you just note it down and have in your mind consumer price index is responsible to define your inflation which combination correctly represents HDI dimension देखो पहले HDI को लेके केते क्वेश्चन आसले तीनटा खाली पैरामीटर मन रखो सब जिंस समाधान हे जिवो सब जिंस सॉल्व हे जिवो हला गोटे जिंस हला किए पब्लिश करूची किए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आउ तीनटा पैरामीटर कोन कोन एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी आउडा कोन पर कैपिटा इनकम ओके सो नाउ अच्छा सब गुडा कते प्रथमटा हि अछि एजुकेशन हेल्थ रहिला एजुकेशन रहिला इनकम रहिला आइडा आंसर इन्फ्लेशन तो नाही जानि छ कटि गला ट्रेड भी नाही कटला एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जीडीपी ए सब तो नाही कटिला जणा ही पड़छ तब जदी पढिछ ठीक से स्लाइड जदी देखिछ आ तुम जदी माने भलो से अटेंड करिछ ना डन आउज दरकार आ दैट्स इट बोले मो 25 टा ही नेथिली यस दैट्स इट ओके इज दैट क्लियर दीपांजलि सचिन चंद्रशेखर अभिषेक प्रणति फर्स्ट क्लास हमर थिला इकोनॉमिक्स रो बहुत गुडे इंपोर्टेंट कांसेप्ट हम पढिले किछि किछि ओवरऑल आईडिया आसला पिले जोड जोड दरकार पड़छ पिले मु जोडे स्लाइड बनेछि एक्सप्लेन करूछि एमिति नुह जे यू शुड नॉट राइट एनीथिंग wherever you feel you need if I speak anything else other than your slides which is mentioned over there you can write it down in your notebook okay आ जोटा तमे लेख सेटा मुंडो को भी जाए आ सेटा सबल पय मन रहया परीक्षा तुम सेटा काम दो मन रखो मोर wordings the class you attend sincerely or attentively that will also help you in the examination hall and the things you are writing down on your note that also will be helpful right so your brain should exercise right you should exercise your brain actively so that you will involve in that process आ सेटा तुमको सबले सहायता करबो लॉन्ग टाइम रिटेन करिया पय जिंसो हला तो लेखु था attentively सुनो लेख भी is that clear so go through the slides notes and with few more topics new topics we'll start our class we will involve in the next class with some new topics okay economics किछि नुवा नुवा concept की आसिया किछि interesting concept को नेकी हमें पढिबा next class so stay tuned till then take care and have a very good day very good happy weekend for you okay happy raja to all of you bye bye thank you